give anything. ठीक है, ठीक है. So that is first rule. Second feature जो है, these nitrogenous bases are always at right angle to the long axis of the DNA. So this is a long axis, and see they are always at the right angle. ठीक है, right angle. If they are not at the right angle, then at that point where there is no right angle, there will be a break in the structure of DNA. Right angle helps them form hydrogen bond between them. If angle is changed, there is de-alignment. Bond will not form. At that point, structure will break. So they must be at right angle to the long axis of DNA. Means nitrogenous bases must be at right angles to the long axis of the DNA. It causes alignment. So they form bond, and thus structure is stabilized. If there is no right angle, there will be de-alignment, no bond is formed, breakage will appear. ठीक है. Second feature. What is the third feature? If you want to separate these two strands, you cannot laterally separate them. Means ऐसे खींच लिया, there will be super coiling, coiling within coiling. Suppose if you are pulling these two brands in opposite direction, what will happen? There will be super coiling, coiling within coiling. So to separate these two brands, there must be uncoiling. If you uncoil them, or if you guided them, they will be separated. ठीक है. And this structure is present everywhere, wherever DNA is found, from virus to human. In every living being, if there is DNA, it is the structure. There is no exception. क्या सोच रहा है? Exception ढूंढ रहा है क्या? Are you finding out exception? Yes. Lateral separation is not possible. अरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मॉडल दिया था, कोई थोड़ी ना ऐसे ही पी के मॉडल दे दिया. देयर वाज एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. क्या डिफिकल्ट लगा? जय हो गया. सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, एंड इफ यू कैन राइट ऑल द स्टेप्स with this limited diagrams, means chemical formula, out of 10 you can get even 8 marks. And but you should write a conclusion, write conclusion on the structure of DNA. देखो कोई व्हाट्सएप निकाल, कोई किया. मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को घर के लिए छोड़ता हूं, कभी भेजता है कोई? नहीं, कोई नहीं भेजा, कोई नहीं भेजा. किसका नुकसान हो रहा है? अगर इफ आई फोर्स यू इन द क्लास, यू डू. घर पे कोई नहीं करता. और रिमेंबर, इफ यू आर, yes, their shape is circular but structure is same. In eukaryotic DNA it is linear. That doesn't mean structure is different. समझा ना? So if you are not writing, so who is going to miss? Yes, practically there will be separation. You will see. Next topic, I think DNA replication. You'll see how things are separated. And during replication, they must be separated. Otherwise, how DNA can be replicated? हाँ, uncoil होगा. And there is an enzyme called gyrase, autoisomerase 2. समझा ना? सब कुछ है. वर्टिकल कट करेगा तो कट तो वर्टिकल ही होगा. अरे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे जब, तब करेंगे सब काटना. तो व्हाट्सएप में भेज देना था. लिखो लिखो, कंक्लूजन लिखो. अरे इफ यू वांट टू लर्न कंक्लूजन, you are giving most valuable time for it, because no book is giving conclusion. No book is giving conclusion. And writing answer without conclusion means you are going to lose 1% marks. You know, 1% mark is earmarked for introduction, 1% mark is earmarked for conclusion. 2% out of 500 is 100 marks. So if an answer is not having
conclusion for 10 marks, you may think 2 marks. What is the problem? See, that 2 marks determine a lot of things. Because when you are not writing introduction, writing conclusion, examiners perceive that this person is just mugging up and writing. See, they are searching a person of understanding. So when you write introduction, when you write conclusion, you show your level of understanding. So answer without introduction, without conclusion, doesn't fetch good marks. Maximum 50%. And think 100 marks, that make a big difference. And most of the students do not write. If they write rubbish. So if your introduction, conclusions are effective, you can easily score 300 marks. And don't think those are getting 300 marks, 300 plus. They are just writing facts. By writing facts, you cannot expect more than 250. Think what is to do with this knowledge after selection. But if you are a man of understanding, that will be useful. With this knowledge, what UPSC will do? Kya karegi UPSC? Think practically. But if you can draw effective conclusion, effective introduction, that means you are a thoughtful person. You write, you have understanding. तो जहाँ पे मार्क्स आते हैं वहीं पे लोग करते नहीं हैं. फैक्ट्स लिख के क्या कर लेगा? 250. अभी मेरे पास एक लड़का था, he wrote 4 films. This time he failed. Twice he failed interview. He is getting just 240 to 50 marks in optional. Optional is history. Now he is switching over to anthropology. क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा. So his optional is history. It is a static subject. Still he is unable to score 250 marks. देखो, your topic is structure of DNA. Why you are drawing a conclusion on functioning? Wrong conclusion. Question is structure. Then you should write on structure only. नहीं सीखेंगे ना हम लोग. और if you know how to write conclusion in optional, you can write in GS, you can write in essay. ऐसे नहीं होता ना. So learning how to write conclusion will be helpful only in optional. That will be helpful in essay also. And do you think essay without conclusion कभी हो सकता है? That will be first essay in the world. Writing essay without conclusion. And you know, every question in optional is like writing an essay. You have started with structure, but shifted to functions. है ना? Function से खत्म क्या है? You should stick to the question only. See, every structure is unique. Every structure is systematic. हाँ, that beginning was fine. लेकिन what you have ended? Function. लिखो. क्यों? अरे सीखेगा तभी ना. तो जैसे वो लिखा है, अगर आता ही है तो लिखेगा क्यों? फिर फंक्शन की बात है. एक शब्द फंक्शन नहीं लिखेगा. अरे मैं तो बताऊंगा ही. मैंने अभी तक ऐसा कुछ है जो बताया नहीं है. एक जून से सुबह से भेजा. सुबह से इट इज मोर लाइक इंट्रोडक्शन. दिखाओ. अच्छा, ऑनलाइन वाले तो कोई लिखा ही नहीं. एक सुबह से लिखा. लिखिए, जैसे भी लिखो. लिखने से ब्रेन इज स्टॉर्म्ड, एंड स्टॉर्म्ड ब्रेन इज ऑलवेज बेटर ब्रेन. आरएनए के लिए है. अच्छा, कौन इंट्रोडक्शन लिखता है? ये देखो, हमें कम से पता चला इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. एंड पीपल प्रोग्रेस विथ प्रैक्टिस. ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी नहीं कर पाए तो आगे नहीं कर पाए. करना तो पड़ेगा ना. अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू राइट. ऑफलाइन तो लिख रहा है, जैसे भी लिख रहा है. राज क्यों नहीं लिख रहा है? अरे क्या होगा, ठीक नहीं लिखेगा तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लिखेगा तो फर्क पड़ेगा. ये पृथ्वी क्यों नहीं लिख रहा है? See, if you want to crack this exam, you have to write. If you don't want, just listen like a kirtan. कुछ नहीं लिखा सौरभ.
अरे कुछ भी डालो, कंक्लूजन लिखो। आप रेप्लिकेशन भी क्यों जा रहे हो? यू फोकस ऑन स्ट्रक्चर ओनली। आई विल नॉट इनकॉर्पोरेट फंक्शन। लिखो। कल एक लाइन का कंक्लूजन था, वही लिखने में 24 आवर्स निकाल दिया सब लोग। क्योंकि देखो, इफ आई आस्क यू टू वर्क फॉर हाफ एन आवर, यू मे वर्क। इफ आई आस्क यू टू थिंक फॉर हाफ एन आवर, यू विल नॉट थिंक। ये कंक्लूजन नीड्स थिंकिंग एंड फोकस थिंकिंग चाहिए। हाँ, चलने में क्या है, चलते रहो। और कंफ्यूजन गणेश चतुर्थी on the wrong line, Ritika. See, Ritika, what you have written, that is fine, but it is incomplete. Are, why you are writing on shape? Shape of DNA in organisms may differ. It has irregular shape. But the structure of DNA in all organisms are similar without exception. So delete shape part. But के बाद से अब continue कर सकते हो. Sanjay, it is more like in introduction. इतना बड़ा लिखा 10 नंबर की, अगर when it is not approved for 60 marks. इंट्रोडक्शन में जा, इंट्रोडक्शन ऐसे होता है. कुछ भी नहीं लिखता. कल का कंक्लूजन पहले बता देता हूं. देखो, इट इज इंट्रोडक्शन. कल का कुछ लिखा नहीं लिखा, सोचा, वो तो मैं देख नहीं सकता. उसका जो कंक्लूजन होना चाहिए, does chromosome contains genetic material which ensures continuity with diversity of living being. Continuity with diversity of living being. Does chromosomes contain genetic material which ensures continuity with diversity in the living world? If a species is continuing because of chromosome, because it helps in transmission of genes from one generation to another generation, and there is diversity within the species, it is also because of chromosome. I give one point that it helps in adaptation, it helps in variation. Asutosh, wrong line. देखो, आप सुनो. Now you will see, is it conclusion? ये तो मैं भी जानता था. जो DNA है, it is a universal structure. It is the same structure is found in virus, bacteria, plants, animals, all living beings. It suggests all living beings have common ancestor. Why there is structural similarity? Because we all have evolved from a common ancestor. That's why there is similarity. So there is no functional difference. So you can write, thus DNA structure is a universal structure which suggests all living beings evolved from a common ancestor. You know, structure of DNA, functions of DNA give indication that there is organic evolution and that diversity in organism from a common ancestor. These are indirect evidence in favor of organic evolution. We get direct evidence from fossil studies, and this chemical structure of biomolecules suggests circumstantial evidence in favor of organic evolution. लिखा नहीं, तुम लोग किए नहीं था कल, इसलिए मैं आज बताया. कल भेजना था ना, तो कोई भेजा नहीं था, तो मैं अभी आज बताया. So Abhishek, you have started with structure, then you are again moving here and there, which is all about introduction. Introduction क्या है? Summary of the frame. So those have summarized the frame and showing to me as conclusion, I am telling them it is introduction. Introduction ऐसे होना चाहिए. DNA is a
double helical structure in which nucleic acids are helically coiling against each other in an antiparallel manner, which is stabilized by hydrogen bond. DNA is a helically coiled structure in which two polynucleotide strands are coiling against each other in an antiparallel manner, which is stabilized by hydrogen bond. So many students are showing it as conclusion. It is not a conclusion. It is an introduction. What I have done, I have summarized the frame. So summary of the discussion is introduction, and essence of the discussion or extraction of the discussion is called conclusion. Extract निचोड़ लो. देखो, suppose this is a discussion, whole discussion, okay? Discussion in the body. When you summarize, it becomes introduction. When you extract, it becomes conclusion. So keep it in mind. When I am writing introduction on something, I have to summarize. When I am writing conclusion on something, nichoro. This is the principle. So देखो, I have told you introduction as well as conclusion on structure of DNA, in which there is summary. Introduction में summary है ना. In conclusion, extraction. That is a simple fact. You can write appropriately. ठीक है. अब हम लोग करेंगे replication of DNA. So देखो, no book is going to give you introduction, no book is going to give you conclusion. You have to think on your own, and never think I will get extraordinary marks without these two. कभी नहीं मिला किसी को, ना आपको भी मिलेगा. And one more thing, if you practice, you can improve. And people are improving by practicing only. Don't shy away. Don't think it is a wastage of time. So instead of reading 2 more books, think more on your topics. Books will never help you in mains. They will give more facts. They can explain facts better. But you have limited option. You have to write your facts only within 200 words, 300 words, or 150 words. So how books are going to help you? There is no book giving introduction, no book giving conclusion, no book is writing within 150 words. See, structure of DNA, you go through any basic books, thousands of words are there. But that question will be asked for only 10 marks. About if you go through 2 books, 3 books, 4 books, same facts will be there. They're explaining in different manners. आपको तो 150 वर्ड में लिख के आना है ना, उसके लिए you need books or you need thought. Just realize your need. People are unmindfully preparing, unmindfully, as if going through books will make them nice. That is helpful for prelims only. In prelims, if you have vast pool of information, you understand this information, you retain this information, it will increase the probability of cracking prelims. But what about mains thing? You have to write only within limited number of words. Have you ever thought how to compress these facts of thousands of words into 150 words? 200 words? You think once. Your idea will be clear that what I need to do in mains exam. People are not thinking at all. Say books. Students ask which books I will read. Are you going to write prelims in anthropology? So how books can help? In my 16 years of teaching career, no one has asked me, sir, how to write introduction, how to write conclusion before taking admission. किसी ने नहीं लिया. से पूछता सर कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, क्या आप कोचिंग टाइम पे खत्म करोगे? As if coaching if ended, your preparation is ended and you are fit for becoming IAS. तो सब हो जाएगा. कभी ये सोचा how to structure my answer, how to introduce my answer, how to end up my answer, how to write my answers within 150 words without compromising facts, diagrams, case studies, everything. Now think, where is the use of books? जो हम materials दे रहे हैं, these are inclusive materials. You tally these materials with any books, you have more information in the materials.
These are processed, these are structured. आपको छोटा लगता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड है, सिंप्लीफाइड है, उसको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देता, बुक्स के पीछे भागता है जहां पे हजारों वर्ड्स लिखा हुआ है. You know, there is a book named after Karp. That book is dedicated to only one subject, replication of DNA. इतनी मोटी सी एक बुक है. I follow that book for replication, and I have reviewed that book in my masters. You read that book and write it in 150 words. और उस बुक पढ़ने के लिए तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा. अब द बुक्स कैसे हेल्प कर सकते, जितने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ, दिस ऑल आर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स. प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम स्टायर, द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. सेल आई हैव टेकन इट फ्रॉम एल्बर्ट्स, बेस्ट बुक इन सेल बायोलॉजी. नो एस्पेक्ट इज लेफ्ट. ये मैंने हार्पर से लिया, बेस्ट बुक ऑन बायोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. मेरे पास घर में लाइब्रेरी है, एंड आई डोंट गो थ्रू दिस जेरॉक्स कॉपी. I don't like Xerox copy. I have original source. So books will never help you. And why I have all these books? Because I have zoology optionals in films. I don't like to go through the photocopy. मेरे एक हॉबी भी है किताब खरीद लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ. तो अब सोचो ये कौन सा बुक में देगा, तो आपको सोचना पड़ेगा ना. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स फॉर मेंस, सी आई प्रमोट टू रीड बुक्स फॉर प्रीलिम्स. जहां पे बुक्स पढ़ना है वहां पे लोग पढ़ते नहीं है, जहां पे पढ़ना नहीं है वहां पे बुक्स के पीछे भागता है. सी इफ दिस टॉपर्स आर ट्रूथफुल, दे विल नेवर से रीड बुक्स विथ एनी ऑप्शनल. दे जस्ट cram up this study materials. If your study material is sound, consolidated, you have better scope to get marks. विवेक भस्म की जो बुक है, ऐसे लोग, वो मेरे नोट्स तुम देखो कैसे बना हुआ, तुम नोट्स देखा तो है ना. ये मत सोचना बहुत आसान लगता तो खराब है, बनाया गया आसान, बनाया गया आसान. किसी बुक्स में आसान नहीं. ऑल द लैंग्वेजेस आर रिटन बाय मी. जो लैंग्वेज दे सिंपलीफाई, मेरा राइटिंग है, वो लैंग्वेज किसी बुक में नहीं होता है. आई स्पीक in a lucid language. I speak in a simple language because you can learn from me. If I speak in flowery language, on that you said you are not eloquent. See, this is not a class of poetic. It is a class of hard facts. You can't be eloquent. And there is no room for eloquency in UPSC. समझा ना? तो write for administration. Don't write for newspaper and books. It should be simple and straightforward. Because if your sentence is not understood by others, how they can work for you? You know what is the definition of administration? Getting things done. That is the simplest definition of administration in every book. So to get things done, think to which extent your level of communication should be. Should it be flowery or it should be simple and straightforward? So write that kind of English. That is administrative English. That is official English. और वही इंग्लिश हमारे स्टडी मटेरियल्स में है. मुझे भी आती है घुमा घुमा लिखना, बट दैट विल नॉट हेल्प. दैट मे हेल्प इन पोएटिक्स, दैट मे हेल्प इन राइटिंग एडिटोरियल. समझा ना? तो सोचना चाहिए. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनमाइंडफुल फॉर देयर प्रिपरेशन. दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम. अगर तरीके मालूम हो जाए ना, आदमी बहुत कम समय में कम मेहनत से आईएएस बन सकता है. तो यहाँ पे तो लोगों को मिसगाइड किया जाता है जानबूझ के, क्योंकि अगर लोगों को समझ में आ जाए तो कोचिंग में आएगा क्यों. लोग ज्यादातर कोचिंग में मिसगाइड करते, डराते हैं लोगों को. डर जाएगा तभी तो कोचिंग में आएगा ना, तभी तो यू विल पे 2.5 लाख. इतनी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम, अगर आपको पता है और सही तरीके से आप प्रिपरेशन लेते हो. पता ही नहीं लोगों को. लोग सोचते किताब पढ़ेंगे, जैसे कॉलेज में पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ लेंगे तो आईएएस बन जाएंगे. ऐसे नहीं होते. यू विल रियलाइज व्हाट यू एक्चुअली नीड, बुक्स और योर थॉट. शायद थोड़ा बहुत रियलाइज ना भी चुका हूं. फॉर मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया था 2 साल पहले आया था.
ये आपका रेप्लिकेशन की कप लिख देना, कप ले हटा दो, कप हटा दो। लिख लिया? हो गया? अच्छा, you have already seen structure of DNA. The replication of DNA. What is replication of DNA? Production of DNA from pre-existing DNA in exact copy. समझा ना? Production of exact copy of DNA from pre-existing DNA called replication. When DNA producing DNA, that is called replication. अरे it is going on in your body. लैब में क्यों होगा? सेल में अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बच पाएगा? Production of exact copies of DNA from pre-existing DNA. Exact copy. There should not be a change even in single nucleotide. If there is change in single nucleotide, it will cause mutation. And if it happens in human beings, it will cause death. Khatam. RNA is formed from DNA. Replication means production of exact copy of something. तो RNA से बनता ही नहीं ना. RNA is produced from DNA. Replication means production of exact copy. So DNA is producing DNA. RNA is not produced from RNA ना. DNA से बनता है. So where replication takes place? Yes, Suvasis, xerox of DNA. Where replication takes place? तुम बताओ. सारे भूल गए. मतलब इरेज कर गया क्या? What? Loudly. Chlorine. I'm not. Clone is something else. There is DNA cloning, but something that is different. It takes place in S phase of cell cycle. In cell cycle, there is S phase. डर क्या? In that phase, replication takes place. खांसी से डर जाता, अब आईपीएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, खांसी से डर जाता है. माइटोसिस और म्यूसिस, ठीक है, जो भी होगा. प्रिपरेशन ग्रोथ इस फेज में होता है. ठीक है, तो दिस इज इंटरफेस. These are phases of interface. ठीक है, देखो अब मैं ये डायग्राम दोबारा क्यों बनाया? आई विल शो लॉट ऑफ थिंग्स हियर. cell cycle. So only during S phase
DNA will be replicated. Synthetic phase. ठीक है. Replication will never take place during G1, G2. So in G1, chromosomes will be like this. ठीक है. So S phase, DNA will be replicated, so chromosome will be like this. There is a doubling of chromosome because of replication. Now it enters into division phase. So suppose this is a cell. थोड़ा सा इधर बनाते हैं. आइडिया रफ आइडिया क्या होगा. DNA. ठीक है. Color change doesn't have any significance. देखो. So DNA with double stand, sorry, chromosomes with double arms enter into division phase. They get separated. They are distributed in to daughter cells. They are daughter cells, and daughter cells get equal number of chromosomes as in parent cells. Now again, there is only one strand. Go to S phase, it will be doubled. Then they will be separated. Daughter cells are having equal number of chromosomes going on. Centromere. So you get the whole picture. If there is no replication, cell cannot enter into a division phase. Because what they will divide? If they divide without replication, then daughter cells will be having half the chromosomes number of parent cells. So that will be a serious situation. That cell cannot survive. हाँ सिलेबस में है ना. G stands for growth phase, growth 1, growth 2. उसके पीछे क्यों जा रही है? उसका कोई काम का है? तो फालतू जो काम करनी है क्यों कर रहा है? इसको देख लो ना. फैक्ट्स उतना ही स्टोर करो जो काम का है. अगर काम का नहीं है ना कचरा है, क्या करेगी सबको लेकर? मैं बचपन में मैं अकेला नहीं हूँ. एवरीवन इन द चाइल्डहुड डेज कलेक्ट्स ऑल फैक्ट्स and most of the facts are garbage. Now you know which facts are relevant, which facts are irrelevant. Irrelevant facts को delete करो, दिमाग हल्का रहेगा. You know, if you go through previous years questions for prelims, you can remove garbage from your preparation. If you are not going through previous years, तो क्या है, garbage को भी लगेगा, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है. The previous year question जो है ना, that will make a difference between garbage and relevant facts. हाँ हाँ क्यों निकलेंगे, हमको तो आना ही है. So that is not different, that is different situation. That is germ cells, but it doesn't happen to somatic cells. Why you are countering? You are countering with a different situation. Tell me, in somatic cells,
If daughter cells are having half the number of parent cells, that cell can survive. So these are not somatic cells. These are germ cells. They have different purpose. And they must have half the number of chromosomes. And in germ cells formation, there are 2 stages, 2 division. क्या counter करता रहता है? You have some informations. I can understand. Story समझ में आया ना? What is the story behind replication? अब हम लोग जाते हैं. So when you are showing occurrence, write only this diagram. सब खुदा देना. Just draw the diagram, it will be done. Occurrence is over. Now come to methods in replication. क्या हो रहा है? Methods in replication. क्या method है? I have written semi-conservative method. So what is that semi-conservative method? I will explain through a diagram. So this is a DNA. So during replication, DNA strands should be separated. In coil state, replication cannot take place. So if separation starts here, they will go towards this end. So I have shown some part of the strands which are separated. So this strand, green strand, produces a complementary strand. So what is the complementary strand? It is complementary to yellow, and its complementary is green. Now all along the remaining part, strands will be separated, and each strand will produce complementary strand. Now they will be completely separated, 2 DNA will be produced. अरे मैं प्रोसेस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोसेस बाद में करना है, प्रोसेस में मत जाना है, सब एक साथ गए तो मिक्सअप हो जाएगा. So these strands will be separated together, these strands will be separated together. ऐसे बनेगा. So now in each DNA molecule, one strand is old strand. This is old strand. This is new strand. New. Here it is old strand. This is new strand. है ना? In every newly synthesized DNA, one strand is old, one strand is new. Any doubt? That is why it is called semi-conservative method. One strand is always conserved. देख नहीं रहा यहाँ पे, डिफाइन करने की जरूरत ही क्या है? देख नहीं रहा यहाँ पे, ये स्टैंड पहले से आ रहा है. सवाल तो समझदारी का पूछना चाहिए ना. यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, क्यों? Why you are arguing? This is a DNA. ये स्टैंड ओल्ड है ना, ये स्टैंड ओल्ड है, बताना. This is synthesized on this template. दिख रहा है, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ मैंने. Don't mix up with one point with another point. प्रोसेस में बाद में देखना, फ्रेम देखा तो मतलब ही नहीं होते. स्टेप्स, ये स्टेप्स है. फर्स्ट ओरिजिन होगा, देन इनिशिएशन होगा. दिस इज प्रोसेस, दिस इज स्टेप्स. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पॉइंट. व्हाई यू आर मिक्सिंग दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट? सो बी फोकस. यहाँ पे मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया. ये एक डीएनए है. दिस डीएनए इज सिंथेसाइजिंग दिस स्टैंड. तो व्हिच वन इज ओल्ड? दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू. दिस स्टैंड इज सिंथेसाइजिंग दिस स्टैंड. तो ओल्ड कौन है? ये होगा ओल्ड. सिंपल सोचना. तो in newly synthesized DNA, one strand is old, है कि नहीं? One strand is new. That's why this method is called semi-conservative method. Nitin, कुछ doubt? Suppose a different situation would have been there. Would have been. In one DNA, both strands are old. In another DNA, both strands are new. Then we could not have said it is a semi-conservative method. Then what we have to say? It is a conservative method. Because both strands are old. In every DNA molecule, one strand is conserved, old strand is conserved, and a new strand is there. So conservation भी है, new भी है. Then what should it be called? Semi-conservative.
And this has been proven by an experiment. उस experiment का नाम है, अभी मैं भूल गया अभी, चलो आ जाएगा, नाम देगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेता हूँ. एक्चुअली आ गया, कभी कभी ना स्किप होता है. मिसेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट. Michelson and Stahl's experiment. That experiment has proven that replication is done through semi-conservative method. This is the method. So you just draw this diagram, label old stand, new stand, and write, according to Michelson and Stahl's experiment, replication is done semi-conservatively. Stock ne Stahl's. जाके चेक कर लेना. Why you are showing knowledge, सौरभ? ज्यादा नॉलेज हो गया, दिखा रहा है इसलिए. दिखा. अब आ जाओ रॉ मटेरियल्स. Tell me what raw materials are required. Now you are writing unnecessarily. This students will be misled by you. Stock experiment कोई experiment नहीं है. बताओ, अभी अभी तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा. डीएनए इज प्रोड्यूसिंग डीएनए. तो what raw materials will be required? Live enzymes. This is technical part. Come some, you can speak something. DNA is producing DNA. Then what raw materials are required? एक deoxyribonucleic sugar चाहिए. Then nitrogenous bases चाहिए. Phosphate group चाहिए. ये तो बोल ही सकता था. So other than enzyme जो है, other than enzyme, deoxyribonucleic sugar, then nitrogenous bases, वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. ये तो चाहिए चाहिए. देन फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए. फिर क्या चाहिए? टेम्पलेट स्टैंड. दिस स्टैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड, ओल्ड स्टैंड. क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड प्रोड्यूस न्यू स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री. टेम्पलेट स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड जो है इज ऑलवेज फ्रॉम 3' to 5', जरूरत नहीं तुम्हारी. फिर क्या चाहिए? ए आरएनए प्राइमर. When DNA is synthesized, it begins with RNA synthesis. After a short length of RNA synthesis, DNA synthesis starts. And that short strand of RNA is called RNA primer. And I will explain why RNA primer is required in the beginning of DNA synthesis. Last जो है, a divalent ion magnesium. डीएनए रॉ मटेरियल सही पकड़ा तो है, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो थोड़ा ब्रेकअप कर दो. तो these raw materials are required which are other than enzymes. Now a set of enzymes are required which are common to both prokaryotic cell DNA and eukaryotic cell DNA. And some separate enzymes are required for prokaryotic DNA as well as eukaryotic DNA. So whenever you are referring to any biomolecular process, you refer to prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Although synthesis of DNA is done in both the cells on the same principle, but there will be some differences. You see differences in terms of enzymes, differences in terms of initiation, तो थोड़ा difference हर जगह होगा, but principle of DNA synthesis is same everywhere.
हाँ, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन भी है, रेगुलेशन भी है, सब है. सो व्हाट आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस? देखो, टच करता हूँ, देखो, ठीक है. सो नाउ enzymes required for DNA synthesis, both for prokaryotic and eukaryotic DNA replication. ठीक है. काम नहीं करेंगे. Enzymes, functions of enzyme. तो क्या एंजाइम है? पहला एंजाइम जो है, फर्स्ट एंजाइम टू एक्ट इज हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन. हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन. और डीएनए ए. So if you write DNA in capital letter, it is a nucleic acid. If you write like this, it is a protein. ठीक है. So this is a protein or enzyme, DNA. It is also known as helix destabilizing protein. देखो, all students should be carefully listening. You can easily understand. If your attention is diverted, then it will be difficult. ऑफलाइन के तो स्टूडेंट मैं समझा सकता हूँ, ऑनलाइन को मैं देख ही नहीं रहा हूँ. देखो, दिस इज डीएनए. ओके, ऐसे डीएनए है ना. डबल बोलो तो 80, ट्रिपल बोलो तो सीजे. ऐसे डीएनए है. सो इफ यू वांट टू सेपरेट दिस टू स्ट्रैंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट? कटेगा. You have to destabilize hydrogen bonds. If hydrogen bonds are broken, then at that point structure becomes weak. है कि नहीं? Because the structure is stabilized because of hydrogen bond. So break some hydrogen bonds. Where it is broken, there is a place in the DNA called ori or site of origin, ori site. In that site, there will be only ATCG binding. Sorry. ठीक है? So this site is called ori site. So these enzymes break these hydrogen bonds at ori site. It doesn't break hydrogen bond where there is CG rich region, because if it breaks two hydrogen bond, it takes less time and less energy, and it can easily break. Breaking two hydrogen bond is easier than breaking three hydrogen bonds. So in the DNA of bacteria, in the DNA of eukaryotic cell, there is ori site. There will be AT rich region. This is AT rich. AT. This is called ori site. समझा ना? AT rich region. तुम पुराना सब भूल गए हो नहीं, तुम सब उल्टा सीधा भी याद कर रहे हो. चुपचाप एक मिनट, जो सुना है छोड़ दो, इधर ध्यान देना. पुराने चीज याद करेगा, पुराने क्या सीख के रखा मुझे नहीं मालूम. मैं जो कह रहा हूँ इसको सुन ले. अब पुराने को याद करेगा फिर सुनेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे बढ़ेगा. आई डू नॉट नो व्हाट यू हैव लर्नड इन योर स्कूल्स एंड कॉलेज. अगर डाउट है तो किसी को भी पूछ लेना. तो और क्या कर सकता हूँ? क्या सीख के रहा नहीं, मैं क्या जानता. कोई मार्कर फर्क नहीं होती. सो दिस एंजाइम ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एट ori साइट. उसका फंक्शन वही है. तो क्या है?
bonds at site. अरे इधर ध्यान देना, क्यों डिस्कस कर रहा है? हाँ? एक तो नया चीज कर रहा है, फिर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो कहां से कर पाएगा? मेरा एक स्टूडेंट था, ही हैज डन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी, समझा? He told me in his ragging in that university hostel, he was asked to write a note on replication, and he made a note on replication in 200 pages. कोई नोट हुआ तो वो मुझे कहा, सर, what I have learned in my graduation in biotech, today I have realized it was not a learning, it was just doing unnecessary things. You can write this in 150 words by including every facts. 200 पेज का नोट्स बनाया था replication में. 200 में बनाया कैसे था? बोला लिख रहा था किताब से, लाइब्रेरी में किताब मिल जाती नहीं. कितना दिन लिया था? 3.5 महीना. उसका रैगिंग चल रहा था. तो अच्छा से सुन लेगा तो 150 वर्ड में पूरा रेप्लिकेशन, और 200 वर्ड में 200 पेज में जो किया था वो करके आ सकता. नॉलेज से एग्जाम नहीं होती है. नॉलेज कैनॉट हेल्प यू सक्सीड इन द एग्जाम अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रेजेंटिंग योर नॉलेज. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? कैन ही राइट 200 पेजेस इन एनी एग्जाम? तो क्या फायदा? क्या आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज बट आई कांट राइट, क्या फायदा है? तो दिस इज द function of helix destabilizing protein. Then comes second enzyme, helicase or DNA B. So here this hydrogen OD site, these have been broken. By this enzyme. Now what you need to do for the purpose of replication, you should make a replication bubble. Replication bubble ऐसे बनाना. So what you can do, if something is breaking this bond and something breaking this bond towards this side, a bubble can be produced. So this enzyme is working like this. Or this is helicase. It is moving in this direction, it is moving in this direction. A bubble is formed. Sorry. क्वेश्चन नहीं करना. जस्ट विद देयर पुल फोर्स खींचते जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन. सेकंड फंक्शन जो है, मैं इसको मिटाऊं. Replication bubble. Then come what is called DNC. Its function is to facilitate the action of helicase or DNA B. इसका फंक्शन इसको फैसिलिटेट करना. एक्शन ऑफ डीएनए बी हेलिकेज. ठीक है. नाउ फोर्थ एंजाइम जो है एसएसबी और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. So this single strand binding proteins मान लो like this, गोल गोल गोल. So they bind both the single strand. They keep the bubble intact. Otherwise,
they will come towards the original position. ऐसे हो जाएगा. So single stand binding proteins keep the bubble intact. If it is not bound by SSB, then they will come to their original. ऐसा जाएगा. क्या सोच रहा है? So a structure bubble बन के रहना चाहिए, and that is kept by SSB. If these enzymes are not binding, ठूस हो जाएगा. क्लियर है? यही है. Up to this clear है? If you have any doubts, you can ask. लेकिन अपनी पुरानी नॉलेज मत देना. अरे मार्कर्स है, मार्कर, लेकिन यहाँ पे मार्कर्स का कोई काम नहीं है. मार्कर्स है तो अभी वो साइड सिलेक्शन के काम है ना, तो रेप्लिकेशन समझना है. तुमको साइड सिलेक्शन करना ना रेप्लिकेशन समझना है, बताओ. मार्क का काम है मार्क करना, तो तुम कर क्या रहा है यहाँ पे? भटक रहा है, इससे तुम्हारा कोई हेल्प करेगा? देयर इज नो रोल ऑफ मार्कर एंजाइम्स हियर, सो व्हाई आई विल डिस्कस अननेसेसरली. Now come to topoisomerase 1. You must know how to discriminate facts. कुछ भी मन में आ जाए, चलो उसको भी देख लेते. इससे क्या होगा? भटक जाएगा. देखो, when actually ऐसे है. So when they are moving in opposite direction, they will create a strain on the side, on this side. एक strain बनेगा क्या? That strain will cause supercoiling. Supercoiling, coiling within a coiling. So DNA is a coil structure. So when they move towards opposite direction, there will be supercoiling. What will be the situation? ऐसे जटा पकेगा. जटा पकेगा. You have to untangle that mesh or supercoiling. How it can be done? सोचो. It doesn't require any knowledge in molecular biology. It needs only common sense. How you can remove this strain and how you can remove this supercoiling. Because if it is not removed, strands cannot be separated further. बताओ क्या करने से वहां पे supercoiling खत्म हो जाएगा and there will be no strain as well. कॉमन सेंस. इसके लिए कोई जूलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. सुपर जटा को ऐसे घुमा पर किधर से गया किधर से आया पता नहीं चलेगा. यू कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. जटा पक गया ना, बाल को जटा पका के देखना ना. बताओ ऑनलाइन वाले, इसके लिए कोई कॉमन सॉरी नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए. हाँ, सिंपली कट हेयर. एक स्टैंड को कट डालो, यहाँ पे एक स्टैंड को कट डालो. दैट स्टेन विल बी रिमूव्ड. सॉरी, काटो, किसी एक स्टैंड को कट दो. सुपर कॉलिंग विल बी रिलीव्ड. कटने से होगा कि नहीं? दैट इज डन बाय टोपोइसोमरेज 1. जब वो करते हैं तब ऐसे हो जाते हैं. ऐसी सिचुएशन आता है. रिलीव्ड. तो यहां पे कट लगा, उधर कहीं कट लगा, रिलीव रहेगा. इसके लिए कौन सा कर्व पढ़ने की जरूरत है? अगर इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक प्रिंसिपल, कर्व विल नॉट हेल्प यू. द बेस्ट बुक ऑन रेप्लिकेशन इज कर्व. सो व्हाट इज
relieving torsional strain on both sides of bubble by making a nick. निक बोलो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैंग्वेज में कट होता है. either of the stems. Making a nick, marking, making. Nick बोलो तो cut. ठीक है. Now this cut can be joined by another enzyme called ligase. उसका काम ये ज्वाइन करना है. फिर अब प्लेन हो गया. There is no stress. Now 2'-isomerase 2 or gyrase comes. Gyrase comes. G-Y-R-A-C. Gyrase. Now gyrase it uncoils DNA strands. Strands get separated. उसका काम अनकॉइलिंग करना. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो है इट इज एक्टेड बाय गायरेज फॉर अनकॉइलिंग टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स. क्लियर है. अनकॉलिंग स्टैंड्स टू सेपरेट बोथ द स्टैंड्स. अब नेक्स्ट एंजाइम जो है लिख लेना आसान है. लाइगेज. मैं टेबल बनाऊं क्या? सो सुभाषिस, आशुतोष, क्लियर है? अदर्स इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी. रितिका ने कही थी कट करो. Now write ligase. इस साइड में लिखना ligase. On this side write ligase. Up. Ligase. Sorry. Joining DNA. With DNA. DNA कहीं पे भी कट लगता है तो इसे ज्वाइन किया जाता है. ठीक है. 7 नंबर. Then RNA primase. It synthesizes short strands of RNA primer. हो गया. अब बताओ कुछ डिफिकल्टीज है? एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव यूज्ड? हो गया. इतना ही प्रोसेस में ही डिस्कस करना दोबारा. अब सोचो 200 पेज क्या किया था. ही इज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट. मैं तो उसको पूछा तो लिखा क्या था तुम? 200 पेज 3.5 महीना. इट वॉज नॉट ए रैगिंग, सुपर रैगिंग. इसी को रिपीट करेंगे डायग्राम के थ्रू.
ठीक है, नाउ विल डिस्कस एंजाइम स्पेसिफिक फॉर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन कल करेंगे। जो सच बताना डिफिकल्ट लगा क्या? समझ में पूरा आया? एंड यू कैन राइट ऑल्सो। मैंने हम लोग क्या किया अभी तक, शायद 100 वर्ड्स भी नहीं लिखा होगा। सेम थिंग विल बी रिपीटेड एक डायग्राम के थ्रू। चलो, थैंक यू। I have seen that those are with good common sense, they are doing better in physical part. Even students with biological background, if they do not have common sense, they are not doing well. थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए और मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अच्छा कर लेगी। सच बताना कुछ डिफिकल्ट लगा इतना? सच बताना लगा तो मैं फिर दोबारा क्लियर करूंगा। फॉरगेट बैकग्राउंड ना, जो मैंने लॉजिकली समझा रहा हूँ वहां पे काट मारने के लिए बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड से होता क्या है बताना। तो टर्म्स तो सब सब्जेक्ट में ही है। अगर आज आप हिस्ट्री भी पढ़ने तो कुछ नया टर्म्स तो आएगा ही। आप टर्म से क्यों डरते हो? मैं कॉन्सेप्ट देखो ना। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो टर्म को रटने में क्या दिक्कत है? आपने लाल किला गए हो, जब फर्स्ट टाइम जा रही थी दिक्कत हुई थी ना, अब अगर जाएगी कम दिक्कत होगी। तो सेम एनालॉजी इज हियर आल्सो। You are learning a new term first time, you will feel difficulty. There is no difficulty, it is your feeling. But when you learn the same term again and again, will it be a difficult one? The problem lies in concept. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो टर्म याद रखने में कौन सा दिक्कत है? तो पैसे में आप पहली बार सुन रहे तो नया तो लगेगा ना। नया चीज से लोग हमेशा अनइजी फील तो करता ही है। तो वही आपके साथ प्रॉब्लम है। नहीं तो पैसे में आप सुना, 2 बार देख लोगे, कभी भूलोगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो पैसे के नाम जानने के बाद भी क्या होगा फायदा? तो भूल जाओ जो तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है। मैं जो समझा रहा हूँ समझ पा रहे हो? अगर नहीं है तो पूछो मुझसे, मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने सिली क्वेश्चन को पूछा, कभी सिली क्वेश्चन तो वही लोग पूछता है जो सीखना चाहता है। क्वेश्चन कुछ भी सीरियस होते हैं, कुछ भी सिली नहीं होते, डिपेंड करता है सुनने वाले पे। यू आर माय स्टूडेंट, यू आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो कैसे मैं आपको उम्मीद करता हूँ बहुत समझदारी से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कुछ बोला क्या? तब मैं तुम मुझसे बात कर, क्लास में क्यों बात करता था? ठीक किया। कहाँ छुट्टी लिखा? हाँ तो बोला है। अभी मैं करता हूँ स्कूलिंग दिवाली। अच्छा मैं लिख देता हूँ, कहीं नहीं लिखी। अरे कल तुम तो जयपुर रात को भी निकलो तो आराम से पहुंच सकते हो। सो दिवाली हॉलीडे विल बी फ्रॉम 4 to 7, 4th November टू। तुम लोग कॉन्सेंसस लाओ। देखो मेरी तरफ से 4 to 7, इफ यू हैव ए कॉन्सेंसस। ऑनलाइन पर से भी पूछ लेना, वो भी तो स्टूडेंट है। हाँ उनसे भी पूछना चाहिए कि वो भी तो तुम लोग के साथ ही है। कहाँ गया? अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट सुभाशीष, आशुतोष, आशीष, रितिका, दे हैव ए प्रपोजल, ना डिमांड नहीं है। दे वांट हॉलीडे फ्रॉम टुमारो, सो यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम प्रपोजल। आई एम इन फेवर ऑफ दिस। वी आर हियर मीन्स यू वांट टू क्लास। आशुतोष क्लास नहीं, तो ऑनलाइन वाले भी आएगा तो मैं क्लास कर लूंगा, क्योंकि वो भी उतना ही स्टूडेंट है जितना तुम लोग हो। थैंक यू सर। तो क्या? अरे टेल अस क्लियरली। ये सर अंकित सक्सेना 4 to 7, सौरभ कुमार 4 to 7 इज गुड सर। आ जाना क्लास करने की, तुम आ जाना, क्योंकि 4 दिन छुट्टी के बाद ना प्रेशर देखो मुझ पे पड़ेगा। हाँ मैं देखो ऐसा है, क्लास मुझे देखो तुम लोग एक क्लास करते हो, मुझे 3 क्लास करेगा, प्रेशर मेरे पे आएगा तो मुझे झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आ जाना क्लास, आ जाना, और एक ना फ्लो में खत्म हो जाएगा। एक फ्लो में फ्रॉम 3rd मनोज ऐसे करे, मुझे चॉइस दे देखना, जो अगर लोग आएगा तो क्लास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तुम लोग डिसाइड कर लेना। मुझे तो आना ही है ना, मुझे तो कल और भी क्लास है। चलो सो ओके, तुम्हारा बैच, सो योर बैच विल हैव हॉलीडे फ्रॉम 3rd। सो लिख देना। अच्छा से लिखना।
चलो हाँ चलो थर्ड से है, सब लोग जब कह रहे हैं, लेकिन मुझे कल आना ही पड़ेगा, पता है सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। चलो इसको थोड़ा सा और थोड़ा इंक्लूसिव करना, जो कौन सा नोट्स है सोहन ये। सर मुझे लगा कि मतलब 10 मार्क्स का तो 2 पेजों में खत्म होना चाहिए। हाँ लेकिन छोटा छोटा बना तो मतलब मुझे लगा कि मैं सिर्फ नाम लिख दूं तो इनके मतलब ये यहाँ पे ये जो फीचर लिखा ना, इसके बगल में लिख देना, यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लिख देना। और मेरे को लगा कि मैं इनको ना बनाऊं, इनके सिर्फ नाम लिख दूं तो चलेगा कि 10 नंबर में भी चले नाम लिख दूं और इसको ब्रीफ एक्सप्लेन मतलब थोड़ा ज़्यादा इसको एलैबोरेट कर दूं। इसको इलाबोरेट करने का, इलाबोरेट का डायग्राम बना रहा है,